What's your name, by the way? I mean, you're saying. आशीष जी, मैं पढ़ाई कर लूँ अपनी। आप कितना क्यूट बोलते हो। वैसे, my cousin cleared the exam last year, so like I'm already prepared. Like I know the pattern and everything. Yeah. पर आपने already prelims के लिए prepare करना शुरू कर दिया? मतलब actually I'm also preparing for prelims 2023. All the best. You do. Just a second. Bhaiya. Two cappuccinos. Oh no! It's on me, silly, relax. But tell me one thing. आप टेस्ट सीरीज क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? Like books are like more than enough for prelims. Okay. Maybe you don't know, so I'll tell you the name of the books. Just don't share it with anyone, okay? It's a secret. आपको किसने बोला ये? मैडम, प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ना कि बुक्स। Oh my god. You are so funny, Ashish. No. So all you have to do is study Lakshmikant for polity, spectrum, and just like a bunch of NCERT books, and I promise you will just like slay prelims, okay? मैंने MCQ पढ़ के ही MD क्लियर किया था। वो तो बस अभी हम UPSC के चक्कर में पड़े हुए हैं। Okay. Well, मैंने भी बुक्स पढ़ के मिरांडा हाउस टॉप किया हुआ है। So CSAT वगैरह तो मेरे लिए what do you guys call it? बाएं हाथ का खेल है। ओह। वैसे एक बात बताइए, ये ऑस्ट्रिच एग इंडिया में सबसे पहले कहाँ मिला था? Do you like eat ostrich egg omelette or something? Sounds really exotic. UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और इसका जवाब ना NCERT की 6ठी क्लास की बुक में है। Oh, yeah. Okay, but tell me one thing. Like, are like the UPSC people like so dumb or something that they would repeat the same question again? जरूरी नहीं है, लेकिन इसीलिए तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है। आप पैटर्न समझ सकें, आपको गाइडेंस मिल सके। Maybe. Guidance. मुझे कौन गाइड करेगा? About NCERTs और टेस्ट सीरीज दोनों जरूरी थे। NCERT से आपकी बेस बनती है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं NCERT से, और PYQ से एंड क्वेश्चन बैंक से यू गेट प्रैक्टिस। क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड इन अ डिफरेंट वे, तो दोनों प्रिपेयर करें प्लीज। CSAT is a very important step, और CSAT में 3 चीजें ब्रॉडली इंपॉर्टेंट हैं: योर क्वांट एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड स्पीकिंग ऑनेस्टली, इट डज नॉट मैटर आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं या प्रोबेबली फ्रॉम अ गुड P-degree कॉलेज। मेरे ख्याल से आपको CSAT के अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CSAT एग्जामिनेशंस ऑफ द IAS पेपर्स। डोंट इग्नोर इट। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रहे कि कॉन्फिडेंस आपका मिसप्लेस्ड ना हो। नॉट बेस्ड ऑन जस्ट बिकॉज आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं और आपकी एजुकेशन अच्छी रही है, इट्स एन एडवांटेज। फॉर ऑल दोज हु अदरवाइज आर वर्किंग हार्ड, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, द पैटर्न्स, यू हैव प्रोबेबली अ बेटर एडवांटेज। So don't get impacted by what your friends tell you and try to impress you, okay, with their P-degree at college, with their English. आप अपनी पढ़ाई करें and make sure you are studying according to a pattern. और guidance हो तो अच्छी बात है. You know people or friends or teachers who can guide you. They'll be helping you for your preparation. See you at Labasna. Bye.